My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing some more practice questions on Quantitative Aptitude section for XAT examination. Start करते हैं. And if you've not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. और साथ में you can also join Telegram channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT for any queries or questions that you have. So, first question. And in each question, pause the video, try to solve it, and then watch the solution. A manager has rupees 10,000 budget to buy cleaning supplies. Mops, disinfectants, and cloth rolls purchased must be in the ratio 3:4:5. Mops cost rupees 250 each, disinfectant rupees 150 each, cloth rolls rupees 100 each. Management requires that at least 10 mops and at least 20 cloth rolls must be purchased. Is it possible to meet all the conditions without exceeding the budget? If yes, how much money is left with him after that? Okay. अच्छा, यहाँ पे क्या है? मिनिमम भी मेंशन होना चाहिए था कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम if he purchases minimum quantity. हालांकि देखते हैं कि उसके अलावा भी कुछ पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, बट इन केस ऑफ मिनिमम. ओके, सो mops, disinfectants, and cloth rolls. So these are 3 items, and ratio of the items should be 3:4:5. So number of items should be in the ratio 3:4:5. Mops cost rupees 250. Disinfectants cost rupees 150. And cloth rolls cost rupees 100. Okay. So total amount क्या हो जाएगा हमारा? If n mops are purchased, then 3n are the total mops. Total cost will be 3n into 250, 750n. Then 4n disinfectants and 5n cloth rolls will be purchased because ratio तो 3:4:5 maintain ही करना है हमको. 4n into 150 will be 600n. Cost of all disinfectants, and similarly 500n will be cost of all the cloth rolls. So this will be our total cost. 750n plus 600n plus 500n. Conditions क्या given है? That management requires at least 10 mops. यानी कि 3n should be greater than equal to 10. Similarly, at least 20 cloth rolls. यानी कि 5n should be greater than equal to 20. अब 3n should be greater than equal to 10. यानी कि n should be greater than equal to 10 by 3. तो minimum value of n will be clearly 4. n should be greater than 4 basically. Greater than equal to 4. और 5n greater than equal to 20 यानी कि n is greater than equal to 4. Both conditions should be satisfied, यानी कि n should be greater than equal to 3, 10 by 3, as well as greater than equal to 4, यानी कि minimum value of n in this case will be equal to 4. That will be equal to 4. और यहाँ पे हमारा total cost कितना आ रहा है? 750 plus 600 plus 500 यानी कि 1850n. 1850n is the answer. So that case n minimum is 4, यानी कि minimum cost will be 1850 into 4 and hence 7400 rupees. Okay, 7400 rupees. So definitely he has sufficient amount, तो money available is not insufficient. तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है. अच्छा, ये चीज तो बाद में ऐड किया ना. इफ यू परचेजेस, इसको रिमूव कर दें, इफ यू रिमूव दिस, तो आंसर विल बी डेटा इनसफिशिएंट बिकॉज 1850 इंटू 4 भी हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ एन कैन बी इक्वल टू 4. मिनिमम वैल्यू 4 है, बट एन कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 5, क्योंकि एन इक्वल टू 5 लेंगे तो भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. तो एट एन इज इक्वल टू 5, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है एग्जैक्टली तो नहीं है, तो 4 भी हो सकता है. एन कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 5. एट एन इज इक्वल टू 5, अवर टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 1850 इंटू 5, तो 9250 rupees. यानी कि देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज, 7400 and 9250. So definitely option A is not the answer, but option D आंसर होता अगर लिखा होता कि मिनिमम वैल्यू लेना है. बट सिंस मिनिमम वैल्यू इज नॉट मेंशनड, मिनिमम इज मेंशनड, तो 7400 और 9250, these two values are possible, and hence answer will be data insufficient. If yes, how much money is left within? For that, data is insufficient. We know for sure कि yes, that is possible, but we do not know कि how much money will be left with him. तो hence data is insufficient for this case. क्या ये क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक समझ पा रहे हो? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Next one, a cylindrical tower has a radius of 7 meters and height of 99 meters. An external spiral staircase winds around the tower exactly 3 times with a constant slope, starting from the ground and ending at the top directly above the starting point. यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ, at the same point it is ending in the top, and it is spiral staircase है, and that is winding around the tower exactly 3 times. So a tourist climbs the staircase to a point at 2/3 of the tower's vertical height
From there, he enters the tower through a gate and walks in a straight line to the diametrically opposite point at the same elevation. So what is the total distance traveled by the tourist? And we have to take pi ka value equal to 22/7. Now, since this is a cylindrical tower, and the spiral staircase is winding around the tower exactly 3 times. And if let us say this is the starting point, so this must be the end point as well at the top. So this will be going somewhat like this. एक सेकंड, डाउन हो गया है तो स्टेयर तो अप ही जाएगा ना, डाउन थोड़ी होगा. So this will be somewhat like, so this is first round, second round, and then finally third round. Okay, so one of the tourists traveled to a point at 2/3 of the tower's vertical height, and then from there he enters the tower through a gate and walks in a straight line to the diametrically opposite point at the same elevation. So total height, if that is equal to 99, so he has only gone to 2/3 of the height. So अगर 3 rounds are in total, so till 2/3 height there will be 2 rounds, 2 complete rounds, isn't it so? Because if total height is h, so till h/3 there will be 1 round, then again h/3, and last height this will also be equal to h/3. So all these will be h/3 or 99/3 in this case, because total 3 rounds है. ठीक है, पहले एक सिंपल क्वेश्चन में समझ लेते हैं सारी बातों को और फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे. देखो, अगर एक ही राउंड होता, इफ देयर वाज ओनली वन राउंड एंड दिस वाज अ सिलेंडर, बिकॉज अल्टीमेटली वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड और हाइट ऑफ द स्टेयरकेस और लेंथ ऑफ द स्टेयरकेस, बेसिकली नॉट हाइट. हाइट तो वर्टिकल हो जाएगा, बट लेंथ ऑफ द स्टेयरकेस. सो इफ देयर वाज जस्ट वन राउंड, let us say this is a cylinder where the perimeter of the cylinder is equal to 3 meters and height is equal to 4 meters. And we have just a staircase that is spiraling one time. So if this is the starting point, it will start spiraling from here and ultimately it will reach this point. So just one round around the cylinder, the cylindrical tower. Okay. अब इसको अगर स्ट्रेच करें, ओपन करें, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द स्टेयरकेस. डायरेक्टली तो हाइट पता नहीं लगा सकते, बट वी नो पेरीमीटर एंड हाइट. ओके, सो इफ वी जस्ट इन केस कट दिस cylindrical tower from here, if we make a cut from here, ठीक है, we make a cut from here, in that case this will be opening and this cylinder will be opening into a rectangle हो जाएगा. And in that rectangle the base will be perimeter of the circle, perimeter of the base, that will be base of the rectangle. So this perimeter, which is equal to 4 meters, this will be the base, and this is height equal to 3 meters. So this will be the spiral starting from the bottom and reaching the top. So what will be the height of the spiral? This will be equal to 5 meters because Pythagorean triplets बन गया simply. This is a right angle triangle. क्या है, क्लियर है? ठीक है, बट अगर एक से ज्यादा स्पाइरल होंगे, लेट अस से अगर एक से ज्यादा स्पाइरल होंगे, इफ देयर वर इंस्टेड 2 राउंड्स, if there were 2 rounds instead, so in that case the first round will be ending at half the height, and then second round will be starting from there and ending at the top. Like in that case, when we are opening, so just find out the length of the staircase for the first half, और second half में भी same ही होगा. So just open the first half. तो first half में height will be equal to, height total 4 meters था, 2 meters. So when you open it, the perimeter will still be 4 meters. एक second. Perimeter was 3 meters, height was 4 meters. उल्टा काम किया है, क्या कर दिए. आंसर चेंज नहीं होगा, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो गई ना.
ठीक है, गलती हो गया ये. सो पेरीमीटर वॉज 3 meters, दिस वॉज 4 meters, बेस वॉज 4 meters. फिर से उल्टा कर रहे हैं. पेरीमीटर 3 meters था, पेरीमीटर हमारा बेस था और हाइट था 4 meters. हाइट विल बी 4 meters, पेरीमीटर विल बी 3 meters. ठीक है, जो 3 and 4 हाइट तो अपना स्टेयर केस का लेंथ विल बी 5 meters ओनली. बट इन दिस केस क्या होगा, हाइट इज डिवाइडेड इन 2 parts because 2 rounds are there in total. So height will be 2 meters only and perimeter remains 3 meters. So height of one round of the staircase will be root of 3 square plus 4 square. So 3 square plus 2 square. 9 plus 4, 13, root 13. And hence total length of the staircase will be 2 root 13 meters. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, तो अब सेम लॉजिक हमें अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन. तो इन आवर क्वेश्चन there were total 3 rounds. Just focus on one of the rounds. So if we focus on this part, and we'll only be opening this part only. In this part, when we are opening this part of the cylinder, so in that case, what will be our total base? Total base will be perimeter of cylinder. And since cylinder का हमारा radius is 7, तो if radius is 7, pi is 22 by 7, तो perimeter will be 2 pi r, 2 into 22 by 7 into 7, which is 44. तो perimeter will be equal to 44 meters. And height will be 33 meters, h by 3, यानी 99 by 3, so that will be equal to 33 meters. So base is 44, height is 33, so length of the staircase for one round will be equal to, by 3:4 का ratio बन रहा है, 33 is 11 into 3, this is 11 into 3, this is 11 into 4, so hypotenuse must be 11 into 5, यानी कि 55 meters should be the height of the 1/3 staircase or height of the staircase when it is completing one round. तो one round का height will be 55 meters. Total 3 rounds है, तो total length of the staircase will be 55 into 3 because there are total 3 rounds. So that will be 165 meters. Okay. Question ये कह रहा है कि the tourist climbs the staircase to a point at exactly 2/3 of the tower's vertical height. यानी कि 2/3 तक ही travel किया, तो only 2 rounds he has traveled. So length traveled by the tourist, height traveled by tourist, staircase का length total traveled by tourist, total distance traveled, that will be equal to 2 into 55 on staircase. Plus additionally, once he reached this height, from here he entered through a gate and reached to the diametrically opposite point. So this will be additional height traveled by him, and this will be equal to diameter of the base, or base का radius है 7, तो diameter will be 14. So this will be equal to 2 times radius. So plus 2 into 7. So 110 plus 14, 124 meters will be distance traveled by him. This will be the answer. 124 meters, option D. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, आंसर भी 124 meters. ओके, आगे बढ़ते हैं. Next question. 3 trains T1, T2 and T3 leave station X for station Y in equal time intervals in the respective order. यानी कि पहले train T1 will be departing, then train T2 will be departing, and finally train T3 will be departing. So all 3 trains depart from station X for station Y in equal time intervals in the respective order. All the trains reach station Y simultaneously at the same time, and they immediately leave for station Z without stopping, which is 480 kilometers away from station Y. T1 reaches station Z 2 hours after T2. T3 turns back immediately towards station Y after reaching station Z and meets train T1 at station O, which is 160 kilometers from station Z. So find the time in minutes taken by train T3 to reach point O from station Y. So let's say this is the path, this is station X, and then here it is station Y, and then finally station Z. So all trains T1, T2 and T3 leave station X for station Y in equal time intervals. Okay, and they reach simultaneously station Y. और उसके बाद की सारी स्टोरी है. So what can we infer from this part? Stretch XY, because we have no idea about the length, we have no idea about the speeds, we also have no idea about the time. What we know is that T1, T2 and T3 are leaving station X for station Y in equal time intervals. Okay, so let us say, for example, if train T1 is taking
x टाइम फ्रॉम x to y, x नहीं ले कुछ और ले लेते हैं x में, क्योंकि x वैसे भी आ रहा है, so let us say it is taking a time, so train T2 will be taking a plus d time, ठीक है, some d time more, and train T3 will be taking additional d time more. हो उल्टा कर रहे हैं ना, क्योंकि ट्रेन T1 इज लिविंग फर्स्ट टाइम, तो T2 विल बी टेकिंग लेसर टाइम, तो माइनस डी होगा, माइनस 2d होगा, तो a माइनस डी, a माइनस 2d, so these will be times taken by T1, T2 and T3 in traveling from x to y. गलतियां बड़ी हो रही है आज. a minus d and a minus 2d, these will be time taken. This clearly hints that time taken are in arithmetic progression. अगर अब तक क्लिक नहीं किया हो इसीलिए समझा रहा हूं इतना, ठीक है. अगर ये क्लिक कर गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अदरवाइज नाउ यू अंडरस्टैंड दैट times taken by T1, T2 and T3, these are in arithmetic progression. And if times taken are in arithmetic progression, also we know that this distance xy is constant for all of them. Right? All of them are traveling this distance only from x to y. So distance is same. And times are in AP. Time taken are in AP. So if distance is same and times are in AP, in that case, speeds will be in harmonic progression. Isn't it so? Times अगर AP में है तो speeds will be in harmonic progression. Also in YZ stretch also distance फिर भी same है. तो when trains are going from Y to Z, again distance will be same. तो if distance is same और अगर speeds harmonic progression में है तो by the same logic times will again be in arithmetic progression. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि YZ स्ट्रेच में भी क्योंकि हमारा डिस्टेंस सेम है, all the three trains are traveling the same distance YZ, तो in YZ stretch as well the times will be in arithmetic progression only. So that is what we had to understand from this given information, the first half. Now Z is 480 kilometers away, यानी कि YZ is equal to 480 kilometers. Then train T1 reaches the station Z 2 hours after T2. So since T1 is taking most amount of time, so T1 should be slowest train. The first half from x to y, T1 is taking a time, T2 is taking a minus d, T3 is taking a minus 2d. So fastest will be train taking slowest time, so minimum time. So fastest train will be T3 and slowest train will be T1. And T1 is reaching station Z 2 hours after T2. So if train T2 is reaching Z after T times, so train T1 will be taking T plus 2 time. And since all times are in arithmetic progression, so train T3 will be taking T minus 2 time in reaching station Z. Is this part clear? The time taken by T1, T2 and T3 will be T plus 2, T and T minus 2 respectively. Okay. The question is saying T3 turns back immediately towards station Y after reaching station Z, because T3 is reaching at first, that is the first train reaching station Z. तो Z में पहुंचने के बाद में after reaching Z it is returning back. So T3 is returning back towards station Y, and in that time it is again meeting train T1 at station O. तो T1 अभी भी जा रहा है Y से Z तक और T3 has turned back and met train T1 at station O. Okay. बात समझ में आई. तो एक्चुअल में क्या हुआ, ट्रेन T1 इज गोइंग, अब इनको कहीं पे यहीं पे बना लें या कहीं से सेपरेट बना लें, क्या करें, चलो यहाँ पे T1 को बनाया हमने. T1 इज गोइंग फ्रॉम Y to Z. लेट अस से दिस इज पॉइंट O वेयर T1 एंड T3 आर मीटिंग, ठीक है, और T3 was going from Y to Z, reached Z and then came back to meet train T1. So this is train T3, path of train T3, reached train Z, reached station Z and then came back to point O. Also distance is given that O is 160 kilometers from station Z. So this OZ distance, this is 160 kilometers. So now can we find out distance traveled by train T1 and train T3? So train T1 has traveled distance कितना 480 minus 160 and train T3 has traveled 480 plus 160. So distance traveled by T1 is 320 kilometers and distance traveled by T3 is 640 kilometers. Distances traveled by train T1 and T3, that is equal to 1:2 in the ratio 1:2. Okay. Distances traveled are in the ratio 1:2. अगर डिस्टेंस का रेशियो है 1:2 तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 2:1 होगा. एक सेकेंड
स्पीड का रेशियो कहाँ से आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो है 1:2। और क्या हमको पता है कि दे आर टेकिंग सेम टाइम, ओके, टाइम सेम है, तो बिकॉज मीट कर रही है दोबारा से, स्टार्ट भी सेम टाइम पे हुई थी एंड दे आर मीटिंग एट द सेम टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1:2, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि स्पीड का रेशियो विल आल्सो बी 1:2। ठीक है, क्या ये क्लियर है? और अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है और हमें पता है कि टाइम टेकन फ्रॉम वाई टू जेड फॉर ट्रेन T1 इज T+2, टाइम टेकन फॉर ट्रेन T3 इज T-2 फ्रॉम वाई टू जेड, और अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है तो वाई जेड स्ट्रेच में सिंस डिस्टेंस इज सेम, तो फॉर सेम डिस्टेंस अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा इन वाई जेड स्ट्रेच, क्योंकि स्पीड का रेशियो नाउ वी नो 1:2 फॉर T1 एंड T3, तो टाइम का रेशियो विल बी 2:1। So the ratio of T-2 and T+2 that will be 1:2, because पहले T1 आएगा फिर T3 आएगा, तो T+2 is to T-2 that is 2:1। अप्लाई कर दो, यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी, तो T+2 अपॉन T-2 दिस इज 2:1, एंड हेंस यहाँ से T+2 and 2T-2, so T will be equal to 4, T will be equal to 6, T equal to 6 आ गया। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे फाइंड द टाइम इन मिनट्स टेकन बाय ट्रेन T3 टू रीच पॉइंट O फ्रॉम स्टेशन Y, तो पॉइंट O फ्रॉम स्टेशन Y टाइम टेकन बाय ट्रेन T3, तो ट्रेन T3 टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन T3 फ्रॉम Y टू Z कितना है, टाइम टेकन फ्रॉम Y टू Z इज इक्वल टू T6 है, तो T-2 यानी कि 4 आवर्स, तो ट्रेन T3 इज टेकिंग 4 आवर्स फ्रॉम Y टू Z, और YZ डिस्टेंस इज 480 और YO डिस्टेंस इज 320, 480 minus 160, तो टाइम टेकन विल बी 320 अपॉन 480 और 2/3 into 4, so 8/3 hours, to multiply by 60, so 8/3 into 60, 8 into 20, 160 minutes will be taken. Option D will be the answer. क्या ये क्लियर है? तो हमने क्या किया, इन द फर्स्ट हाफ from the first two lines we understood that all three trains are starting at a gap of time, at a gap of certain time, they are starting in equal time intervals, so times taken by trains are in arithmetic progression, T1 is starting first, T3 is starting last, तो फर्स्ट ट्रेन जो पहले स्टार्ट हो रही है T1 दैट मस्ट बी द स्लोएस्ट ट्रेन, T3 मस्ट बी द फास्टेस्ट ट्रेन, ओके, एंड सिंस डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इज सेम, तो टाइम आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो स्पीड मस्ट बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट इज फर्स्ट थिंग। देन वी फाउंड आउट देन फ्रॉम Y to Z time taken by T1 is 2 hours more than time taken by T2. The gap is that of 2 hours. And since YZ distance is also same for all the trains, so since distance same hai, so times must again be in AP. So if time taken by T1 is 2 hours more, time taken by T3 will be 2 hours less. So time taken by T2 is T, so T1 time taken by T1 will be T+2 and time taken by T3 will be T-2. Additionally, we knew that train T3 comes back from Z and meets train T1 at point O, that is 160 kilometers at a distance of 160 kilometers from station Z. The distance traveled by train T1 is 320 kilometers in that same time, and in that same time distance traveled by train T3 is 480 plus 160 यानी कि 640 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो 1:2 आ गया, स्पीड का रेशियो भी 1:2 होगा क्योंकि टाइम सेम है, और जैसे ही हमें स्पीड का रेशियो 1:2 मिल गया तो हमें पता है कि टाइम टेकन हमें पता है T+2 एंड T-2 फॉर T1 एंड T3, और अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी 2:1 होगा, T+2 by T-1, T-2 दैट इज इक्वल टू 2/1, तो T इज इक्वल टू 6 आ गया, अकॉर्डिंगली हमने अप्लाई कर दिया, 2/3 डिस्टेंस के लिए टाइम टेकन विल बी 2/3 into 4 एंड हेंस 8/3 विच इज इक्वल टू 160 मिनट्स, सो दैट इज अवर क्वेश्चन। ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, क्लियर है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इसको, समझ में आया? अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है इस क्वेश्चन में तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और थोड़ा बहुत 2-4 बार हमें चीज़ें अप्लाई करनी थी इस क्वेश्चन में, करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। A dishonest retailer buys grains from a wholesaler and sells it to a customer. While buying, he uses a faulty balance that measures 1200 grams for every 1000 grams he pays for. He marks up the price by K% on the cost price. He offers a discount of 10% on the mark price. While selling, he uses a faulty balance that measures 900 grams for every 1000 grams he charges for. If his overall profit percentage on the investment is exactly 76%, then find the value of integer closest to K. तो क्या क्या गिवन है हमें, dishonest retailer है buys grains from a wholesaler and sells it to a customer.
अगेन CP/SP का रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, हर एक स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करते हैं. इफ यू सीन माई डिसऑनेस्ट सेलर वीडियो, तो आई एम एवरी टाइम यूजिंग द रेशियो मेथड. ठीक है, और यही सेम चीज फ्रैक्शन में भी लिख के कर सकते हो अगर चाहो तो CP/SP में क्या फर्क पड़ रहा है, वाइल बाइंग ही इज यूजिंग अ फॉल्टी बैलेंस दैट मेजर्स 1200 grams for every 1000 gram. So he is actually paying for 1000 grams, but he is taking 1200 grams. So paying for 1000 and taking 1200 grams. So 1000 is to 1200. It is costing him only 1000, but he is getting 1200. तो रेशियो इफेक्टिवली क्या आ रहा है, 10:12 आ रहा है. ठीक है, इफेक्टिव रेशियो इज बेसिकली 10:12 ओनली. 12,000 को लिख दिया था, आज बड़ी बहकी बहकी बातें हो रही हैं. 10:12. ठीक है, सो ही मार्क्स अप द प्राइस बाई K% ऑन द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो मार्क्स अप बाई K%. अब so we can write this as 100:100 plus K, or for time being we can write this as A:B. In our calculation we write this as A:B. Okay, next he offers a discount of 10% on the mark price. So discount of 10% यानी कि 1/10 का discount दे रहा है on the cost price. So effectively if cost price is 10, he is taking only 9 rupees due to this statement. While selling, he uses a faulty balance that measures 900 grams for every 1000 grams he charges for. So he charges for 1000 grams, but he is measuring only 900 grams. He is only giving 900 grams. तो जितना वो दे रहा है उतना ही उसका कॉस्ट लग रहा है, एंड ऑब्वियसली वो प्रॉफिट के लिए दे रहा है. तो इन दैट केस सेलिंग प्राइस पे अफेक्ट विल बी हायर देन ऑन कॉस्ट प्राइस. तो 9:10 का रेशियो आएगा, बिकॉज द कॉस्ट इज ओनली फॉर 900 grams and he is actually getting amount for 1000 grams. So 900:1000 and 9:10 will be the ratio. And effectively, ultimately, his profit percentage, overall profit percentage on the investment, that is exactly 76%. यानी कि 100 का सामान है तो is actually getting 176 rupees. Or we can say that 76% is basically 19/25. So for on 25 rupees, he is getting 19 rupees का profit. यानी कि 25:44 will be the ratio, CP/SP. Okay. अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 9:10 10:9 ये तो कैंसिल आउट हो गया, और क्या कैंसिल आउट हो गया, 10 से यहाँ पे बचेगा अपना ओनली 10. 12 से कैंसिल आउट कुछ होगा, 3 बचेगा यहाँ पे, और दिस विल बी इक्वल टू 44. ओके, दिस विल बी फर्दर बी कैंसिल आउट, 5:22 आ गया अल्टीमेटली. सो बेसिकली A/3B is equal to 5/22, and hence A/B becomes equal to 15/22. So if CP is 15, SP is 22, which is 7 higher. तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, प्रॉफिट विल बी 7 ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ 15, तो 7/15 इफेक्टिवली मार्क्ड अप बाई K%. ठीक है, तो A/B हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया 7/15 का. हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मार्कअप कितना क्या होगा. तो 7 का मार्कअप क्या है ऑन 15, बिकॉज 15 अगर कॉस्ट प्राइस होता तो he has marked up by 7 and hence हमारा जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 22 और मार्क प्राइस इज 22, उसके बाद में डिस्काउंट दिया है. बट इफेक्ट समझ पा रहे होगे. ठीक है, कि इफ CP इज 15 तो 7 का मार्कअप है, तो परसेंटेज क्या आएगा 7/15, विच विल बी रफली 46.66%. और वी कैन से 7/15 क्या हुआ हमारा, दिस इज 6/15 प्लस 1/15, और 6/15 इज 40%, 2/5 40%, और 1/15 will be 6.66%. So 40 plus 6.66, 46.66%. Option D is the closest. 47 will be the answer. Integer closest to K, that will be 47. Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next one, a graphic designer is creating a rectangular poster that must contain a fixed printed area equal to a square centimeter. यानी कि area of the printed area is fixed, that is constant. To accommodate the framing and header, the design requires 6 cm margins at the top and bottom, 4 cm margins on the left and right sides. To minimize the total area of the paper used, what must be the aspect ratio, height is to width of the printed area? So if this is our total paper, in that total paper we need to leave margins for framing and header. Design requires 6 cm margins at the top and the bottom. So this must be equal to 6 cm. This must also be equal to 6 cm. Similarly, 4 cm margins on the left and right. This must be equal to 4, and this must also be equal to 4.
Okay, and then this inside, this is basically our printed area. And question asking about what must be the aspect ratio of the printed area, not what must be the aspect ratio of the total paper. Okay, so let us assume that this is base, so base is equal to B, and this is height. Let us say height is equal to H. और फिक्स क्या है? H into B is fixed. H into B, this is equal to A. So this is fixed. Product of height and base, that is fixed. And we have to minimize the total area of the paper used. This has to be minimized. So total area of the paper क्या आ जाएगा? If height is H, the total height of the total paper used will be H plus 12. Similarly, base of the total paper used will be B plus 8. So total area will be equal to H plus 12 into B plus 8. And this has to be minimized. Multiply कर दो H into B plus 8H plus 12B plus 96. This has to be minimized. Out of this, 96 तो कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, और h इंटू बी भी हमारा इक्वल टू a है, सो ये भी कांस्टेंट है. So basically we have to minimize 8h plus 12b. This has to be minimized. This has to be minimized. और when h into b तो गिवन है, इक्वल टू a है, भले ही वो वैल्यू कांस्टेंट है, हमारा कोई नंबर नहीं गिवन है, बट ये गिवन है कि h इंटू बी कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड वैल्यू है. तो 8h प्लस 12b का वैल्यू क्या होगा? जब भी कभी हमें मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करना हो, प्रोडक्ट इज गिवन, या मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करना हो प्रोडक्ट का, और सम का वैल्यू इज गिवन, इन बोथ केसेस वी हैव टू अप्लाई am greater than equal to gm, arithmetic mean greater than equal to geometric mean. Okay, so यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे. So arithmetic mean of 8h and 12b, that will be 8h plus 12b divided by 2. 8h plus 12b, this divided by 2, and this must be greater than equal to am greater than equal to geometric mean. Geometric mean क्या होगा? Square root of, because there are two numbers, the square root of 8h into 12b. Okay, and पहले बात समझ लेते हैं. तो if a and b are two numbers, in that case there and they should be positive, क्योंकि height और width है, तो definitely these are positive values. So if a and b are positive, then their arithmetic mean will always be greater than equal to geometric mean. यानी कि a plus b by 2, which is average, will be greater than equal to square root of ab. And the equality holds when a is equal to b. जैसे ही a equal to b हो जाएगा, तो a plus b by 2 will be equal to a only, and root ab will also be equal to a only. So that is why when a is equal to b, there is equality. Otherwise, arithmetic mean is greater than geometric mean. Okay, and in this case we have to minimize total area. So if total area has to be minimized, तो 8h plus 12b should be minimized, क्योंकि h into b constant है, 96 constant है. 8h plus 12b कब minimum होगा? भाई हमें पता है कि in all the cases 8h plus 12b by 2, this must be greater than equal to this value, but this is nothing but constant only, because this is root of 96 into h into b, so this is constant. So 8h plus 12b by 2, this must be greater than equal to some constant. या तो उससे बड़ा होगा या बराबर होगा. कब बराबर होगा? इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन 8h इज इक्वल टू 12b. और इक्वालिटी जब होगा तभी तो मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि अदरवाइज तो उससे बड़ी वैल्यू होगा. ठीक है, तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू ऑफ 8h प्लस 12b व्हेन इक्वालिटी होल्ड्स. इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन 8h इज इक्वल टू 12b, which implies कि h by b is equal to 12 by 8 is equal to 3/2. Okay, for h and b we assumed these were basically heights and width of printed area. तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा, हाइट बाई विड्थ क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर?
क्योंकि हमें ए की वैल्यू गिवन नहीं है, दैट इज वाई वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मिनिमम एरिया, बट अगर गिवन होता तो वहां से हम वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते. ओके, so in general we have, if we have n numbers given, a1, a2, a3 till an, if n positive numbers are given, so in that case arithmetic mean of those numbers will always be greater than equal to geometric mean. So arithmetic mean will be average of all those numbers. So a1 plus a2 till an, if there are n numbers, so divide by n, this will be arithmetic mean. And geometric mean will be product of those numbers a1, a2 till an, all of them multiplied to the power 1 by n. And this relation will always hold true. And equality will hold only when all of them are equal. a1 is equal to a2, a is equal to a3, a is equal to an. Okay. आगे बढ़ते हैं. Next question. In a specific base system with base n, where n is a positive integer greater than 2, the quadratic equation x square minus 10x plus 22 is equal to 0. Has two distinct real roots which are consecutive integers. So what is the value of n? Importantly, जो values हमें given है 10 on base n, so an represents that number a is written in base n. So 10n implies that 10 is not in decimal system, but this value of 10, this 10, this is equal to 10 nahi hai, this is 10, so this 10 is basically in base n. Okay, this is 10 in base n. Similarly, this 2 is base in also in base n. तो पहले हम इनको अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको सॉल्व कर पाएंगे. इक्वेशन तो सिंपल है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. और जरा सा भी डाउट है बेस सिस्टम में, तो बेस सिस्टम में घबराना नहीं है. देखो सिंपल सा पहले समझो कि वी ऑल नो डेसिमल बेस. तो इफ दिस 10 वाज रिटन इन डेसिमल बेस, so what does that mean in decimal base 10? So this implies, basically this 10 implies that this 0 multiplied by 1, place value of this 0 is 1 because unit digit है, और 10 digit का place value क्या होगा, that will be 1 into 10. और further if we had the number 234 written decimal system, that implies that 234 कैसे आता है. This is basically, this is unit digit, तो 4 into 1 plus 3 into 10 plus this 2 into 100, यही तो है. So similarly you have to convert these things in base n also. ठीक है, तो if there is a number mentioned 234 in base n, so that will imply unit digit is 4, तो value of 4 will be 4 into 1 because base में क्या होगा, n to the power 2, 3, 4 in base n. So this value unit digit will be n to the power 0 multiplied by n to the power 0. This will multiply by n to the power 1 and this will multiply by n to the power 2. जैसे कि हम base 10 में करते हैं, 10 to the power 0 यानी 1, 10 to the power 1 यानी 10, 10 to the power 2 यानी कि हंड्रेड्स. ठीक है, तो हंड्रेड्स डिजिट हो गया, 10 डिजिट हो गया और सिंगल यूनिट डिजिट हो गया. सिमिलरली n to the power 0, n to the power 1, n square. तो 4 into 1 plus 3 into n to the power 1 यानी 3 into n plus 2 into n to the power 2 यानी n square. So this will be the value of 234 written in base n. That is it simply. Clear है? बस यही बात हमें यहाँ पे कर देनी है. So 10 basically 10, फिर से 10 बोल रहा हूँ, 10 in base n, this is equal to 1 into n and 0 into 1. So 0 into 1 plus n into 1, this is equal to n only, nothing else. 2 in base n, again 2 into 1 plus 2 into n, this is 2n plus 2. So basically the equation is x square minus nx plus 2n plus 2 equal to 0. This is the actual equation. And two distinct real roots are there which are consecutive integers. So what is the value of the n? अब एक तरीका, best approach is to use the options now. ठीक है, क्योंकि अब हमने कन्वर्ट कर लिया n के टर्म्स में, सो वैल्यू ऑफ n अप्लाई करते जाओ. सो n इज इक्वल टू 7, 8, 9, 11 एंड 12. दीज आर पॉसिबल वैल्यूज. नाउ सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू n एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2n plus 2. एंड वी ऑल्सो नो दैट रूट्स आर कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स. अब एक बात बताओ, अगर रूट्स हमारे कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो वन रूट विल बी, भाई एक रूट ऑड होगा और एक इवन होगा. कॉन्सेक्यूटिव है तो डेफिनेटली एक ऑड होगा, एक इवन, या तो फर्स्ट विल बी ऑड, सेकंड विल बी इवन, और फर्स्ट विल बी इवन, सेकंड विल बी ऑड. बट ईदर वे सम विल ऑलवेज बी ऑड. ये बात तो पक्की है कि सम विल डेफिनेटली बी ऑड, यानी कि n मस्ट बी ऑड. n तो ऑड ही होगा. सो इफ n इज ऑड तो 8
and 12 are anyway rejected. They are not possible. We only have to check for 7, 9 and 11. So one of these must be the answer. 7 or 9 or 11. क्लियर है? ठीक है, अब टेस्ट कर लेते हैं. सो इफ सम इज इक्वल टू n, तो यानी कि n इज इक्वल टू 7 पुट किया हमने, तो प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 2, यानी कि 2 इंटू 7 प्लस 2. So that should be equal to 16. So can you think of two consecutive integers for which sum तो n 7 हो but product 16 हो? पॉसिबल ही नहीं है भाई. या तो 1 इंटू 6 होगा. ठीक है, क्या क्या पॉसिबल है? 1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6. 2 इंटू 5 एक सेकंड 7 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं ना, तो 3 इंटू 4 एक ही तो पॉसिबल ये होगा तुम्हारा. क्या कर रहे हैं, सारे केसेस की जरूरत ही नहीं, कॉन्सेक्यूटिव तो निकालना है. तो 3 इंटू 4 एक ही तरीका है, दैट इज इक्वल टू 12 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 16. तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर 7. ठीक है, 9 के लिए देखते हैं. तो फॉर 9 क्या होना चाहिए प्रोडक्ट हमारा? 2n प्लस 2, नहीं 2 इंटू 9 प्लस 2 20. और कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 4 इंटू 5 विच इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 20. तो यस, दैट इज पॉसिबल, दैट मस्ट बी द आंसर. अगर 11 के लिए चेक करते हैं तो 2n प्लस 2 विल बी 24. 2 इंटू 11 प्लस 2 24. अब क्या 24 प्रोडक्ट आ सकता है 11 से? 3 इंटू 8 से तो आ सकता है कि 11 सम आ रहा है और 3 इंटू 8 से 24 वैल्यू आ रहा है. बट द पॉइंट इज 3 इंटू 8 आर नॉट कॉन्सेक्यूटिव. कॉन्सेक्यूटिव लोगे तो 11 से तुम्हारे 5 और 6 ही आएंगे. 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 एंड नॉट 24. डेफिनेटली 11 इज नॉट द सॉल्यूशन, 9 इज द ओनली सॉल्यूशन. क्लियर है? तो ऑप्शंस का यूज करके सॉल्व कर सकते हो इसके बाद में. ओके, तो सेकंड वे क्या हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन से इजीली यूज कर लिया, बट मान लो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो या फिर और भी इसके आगे प्रोसेस हो, तो उस केस में कैसे सॉल्व करोगे? वी नो दैट n इज अ सम एंड नंबर्स आर कॉन्सेक्यूटिव एंड 2n प्लस 2 इज द प्रोडक्ट. सो इफ नंबर्स हमारे कॉन्सेक्यूटिव हैं एंड उनका सम आ रहा है, तो हाउ टू फाइंड आउट कि नंबर्स क्या होंगे? भाई दो पार्ट्स में तुम्हें डिवाइड करना है इनको, इजंट इट सो? तो इफ नंबर्स आर कॉन्सेक्यूटिव तो उनका जो एवरेज है, एवरेज क्या होगा? एवरेज विल बी n बाई 2. भाई 2 नंबर्स हैं और दोनों का सम n आ रहा है, तो एवरेज विल बी n बाई 2. एंड सिंस दे आर कॉन्सेक्यूटिव, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 1 का है. डिफरेंस बिटवीन देम इज 1. तो या तो ऐसे सोच लो कि इफ वन नंबर इज p, अदर विल बी p प्लस 1. तो p प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n. तो यहां से तुम्हें p की वैल्यू मिल जाएगी कि 2p इज इक्वल टू n माइनस 1. तो p इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2. और फिर नेक्स्ट नंबर होगा p प्लस 1, यानी कि n माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, यानी कि n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा. या फिर ऐसे सोचो कि तुमने एवरेज निकाल लिया, एवरेज n बाई 2 है, अब तुम्हें डिफरेंस चाहिए 1 का. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, कभी और 2 का डिफरेंस होगा, कभी 3 का डिफरेंस होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन में. तो अगर 1 का डिफरेंस है, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो n बाई 2 इज द एवरेज. तो 1 नंबर शुड बी डिफरेंस बाई 2 लेसर एंड 1 नंबर विल बी डिफरेंस बाई 2 मोर, यानी कि 1 नंबर विल बी n बाई 2 माइनस हाफ, अदर नंबर विल बी n बाई 2 प्लस हाफ. तो फर्स्ट नंबर विल बी n माइनस 1 बाई 2, नेक्स्ट नंबर विल बी n प्लस 1 बाई 2. क्या ये समझ में आ रहा है? बिकॉज दो नंबर्स है हमारे पास और दोनों नंबर्स का सम n आया है, तो एवरेज मस्ट बी n बाई 2. अब डिफरेंस दोनों के बीच में 1 का है, तो अगर 1 का डिफरेंस है तो 1 बाई 2 हमने डिफरेंस जो है, डिफरेंस बाई 2 लेस किया, एक पहले नंबर को और सेकंड नंबर को डिफरेंस बाई 2 मोर किया. तो n बाई 2 माइनस हाफ, दैट इज फर्स्ट नंबर, n बाई 2 प्लस हाफ विल बी अवर सेकंड नंबर. ओके, तो दोनों नंबर्स मिल गए. अब इनका प्रोडक्ट हमें पता है 2n प्लस 2, अप्लाई कर दो. So n minus 1 by 2 into n plus 1 by 2, this must be equal to 2n plus 2. So n square minus 1 by 4, or n square minus 1 is equal to 4 times 2n plus 2. So n square minus 1 is equal to 8n plus 8. So n square minus 8n minus 9, this is equal to 0. So product is minus 9. Sum is 8. Sum 8 आ रहा है, product minus 9 आ रहा है. लेकिन नंबर्स क्या होने चाहिए? नंबर शुड बी 9 and minus 1. 9 and minus 1. Now since n has to be a base value, base system में हमारा n क्या है? बेस है, तो कैनॉट बी नेगेटिव. तो n मस्ट बी इक्वल टू 9. तो क्लियरली हमारा ऑप्शन सी 9 विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. Next one. A chemist has two vessels. Vessel A contains a solution of acid and water in the ratio 7:3. Vessel B contains another solution of acid and water in the ratio 3:7. He creates a new mixture M by taking X liters from vessel A and Y liters from vessel B. To reduce the cost, he then replaces 20% of mixture M with pure water. The final concentration of acid to water in the resulting mixture is 3:5. So what will be the ratio X is to Y? What will be the ratio X is to Y? So in the first vessel, the ratio of acid and water in vessel A is 7:3. In vessel B, the ratio is 3:7. When they both are mixed in the ratio X is to Y,
द फाइनल रेशियो क्या हो रहा है पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि उसके बाद में प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस क्या कर रहे हैं, आफ्टर यू मिक्स देम देन मिक्सचर is created, ठीक है, मिक्सचर M is created. Now in this mixture M, to reduce the cost, he is replacing 20% of the mixture M with pure water. मिक्सचर M में रेशियो क्या है हमारा एसिड और वाटर का, ये हमें पता नहीं है, दिस इज अननोन, बट वी नो कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड टू वाटर इज 3:5, बट आफ्टर द रिप्लेसमेंट, ठीक है, आफ्टर रिप्लेसमेंट रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 3:5 एंड वी आर रिप्लेसिंग विद प्योर वाटर। रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है, प्योर वाटर से हो रहा है। सो अगर रिप्लेसमेंट प्योर वाटर से हो रहा है तो जिसमें रिप्लेसमेंट होगा, बिकॉज द क्वांटिटी दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड दैट इज नॉट बीइंग कांस्टेंट, ठीक है, वी रिमूव्ड सम पार्ट फ्रॉम एम, ठीक है। तो एम में अगर रेशियो हमने मान लिया कि पी टू क्यू है एसिड और वाटर का, लेट अस से द रेशियो इज पी टू क्यू, सो पी टू क्यू बिफोर रिप्लेसमेंट होगा। आफ्टर रिप्लेसमेंट क्या होगा, जैसे ही तुम रिप्लेसमेंट रिमूवल, अगर बिफोर रिमूवल देखेंगे तो बिफोर रिमूवल पी टू क्यू रेशियो है इनिशियली मिक्स करने के बाद में। आफ्टर रिमूवल विल ऑल्सो भी पी टू क्यू ओनली, जब तक रिप्लेस नहीं करोगे, यानी कि ऐड नहीं करोगे वाटर। अब एडिशनली वी एडेड प्योर वाटर, इफ यू हैव एडेड प्योर वाटर तो रिमूवल के बाद में वाटर का क्वांटिटी तो चेंज हुआ, बट एसिड का क्वांटिटी क्या है, सेम रहा, इजंट इट सो। तो हम कैलकुलेशन अपनी किस पे करेंगे, एसिड पे करेंगे, वी विल बी कैलकुलेशन डूइंग कैलकुलेशन ऑन एसिड ओनली, ठीक है। सो आफ्टर रिमूवल एंड बिफोर रिप्लेसमेंट द रेशियो इज पी टू क्यू। आफ्टर रिप्लेसमेंट रेशियो में हमारा क्या है, फर्क पड़ेगा वाटर पे, एसिड पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो वील बी डूइंग अवर कैलकुलेशन एसिड ओनली। क्या ये बात क्लियर है, बिकॉज फाइनल रेशियो इज गिवन दैट इज 3:5 और 20% इज बीइंग रिप्लेस्ड, दैट इज ऑल्सो नोन, यानी कि 1/5 इज बीइंग रिप्लेस्ड, यानी कि 4/5 विल बी इंटैक्ट। सो आउट ऑफ दिस टोटल अगर P liters इज एसिड एंड Q liters इज वाटर, तो 4/5 ऑफ द P विल बी रिमेनिंग, दैट विल बी रिमेनिंग बिकॉज 1/5 विल बी रिमूव्ड आफ्टर 20% रिमूवल, ओके। सो calculation concentration of acid before replacement and after replacement, that will be counting, ठीक है। तो 3 is acid out of total 3 plus 5 8 mixture, finally 3/8 is our final concentration। initial concentration पता नहीं है, let us say that is P upon P plus Q, कि P acid है P plus Q है, this is our initial concentration। replacement factor कितना है, 1/5 is being replaced, यानी कि 4/5 is intact। तो initial concentration multiplied by replacement factor which is 4/5, this will be equal to final concentration, and hence P upon P plus Q, this becomes equal to 5 into 3 15 upon 32, P by P plus Q, that is equal to 15/32, which implies कि if P is equal to 15, P plus Q is 32, यानी कि P अगर 15 है तो Q must be 17। क्या ये क्लियर है, अगर P हमारा 15 है तो Q must be equal to 17, okay। So we know the ratio now 15:17 after mixing, and we've taken X quantity of acid mixture A and Y quantity of mixture B, दोनों ही केसेस में 7:3, यानी कि वैल्यू क्या है, 7 + 3 10 आ रहा है दोनों केसेस में, तो ऑलरेडी इक्वल तो है ही है, तो डायरेक्टली तुम इक्वेट कर सकते हो। अदरवाइज पहले हम इन वैल्यूज को, अगर मान लो A10 होता है A5 होता, तो पहले दोनों को इक्वल करते, उसके बाद में फिर एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करते, बट दे आर ऑलरेडी इक्वल, सो वहाँ पे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो 7x and 3x will be quantity of acid and water in mixture A, and 3y and 7y will be quantity of acid and water in mixture B. Now we are adding these two, so 7x plus 3y will be total acid in the mixture M, divided by total water will be 3x plus 7y. The ratio comes out to be equal to 15/17. अब यहाँ से will be getting value of x is to y. सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगा 17 into 7, that is equal to 119 minus 45, तो 72x will be equal to 51y, और ये आ रहा है 85, 105 minus 51 54y, तो x by y is equal to 54/72, 72 ये आ रहा था, 119 minus 45 74 आ रहा था, 74 54/74, that is equal to 27/37, x is to 5 का रेशियो इज 27:37, ऑप्शन ई इज द आंसर। क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके,
अब यहाँ पे एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते थे। जब हमें एक बार रेशियो मिल गया है 15:17, तो इसके बाद वी कैन ऑल्सो अप्लाई एलिगेशन। फर्स्ट केस में अगर एसिड में एलिगेशन अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट केस में एसिड कितना है, एसिड इज 7:3, एसिड एंड वाटर का रेशियो, तो एसिड इज 7/10। इन सेकंड मिक्सचर बी, एसिड इज 3/10, एंड इन ओवरऑल इन मिक्सचर एम रेशियो कितना है, 15:17 यानी 15/32। बट बिफोर अप्लाइंग एलिगेशन, हमें ऑल वैल्यू शुड बी इन इंटीजर्स, तो मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ 32 एंड 10 विच इज 160। तो 160 से सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, तो 160 into 7/10, that is equal to 16 into 7, 112. This will be 16 into 3, 48, and this will be 15 into 5, 75. So 75 minus 48 is 27, and 112 minus 75, that is 37. Ratio of A and B should be 27:37. Okay, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a team of 40 workers can complete a project in 50 days working 8 hours a day. The project starts with 40 workers working 8 hours a day. After 10 days, 10 workers leave. After another 10 days, 10 more workers leave. This pattern continues until only 10 workers are left. The remaining workers then continue until the work is finished. However, every time workers leave, the remaining workers increase their daily working hours by 2 hours up to a maximum of 12 hours per day. In how many days total approximately is the project completed? Total 40 workers हैं, they can complete a project in 50 days. 40 workers 50 days when they are working 8 hours a day. तो यहाँ से वर्क की वैल्यू हमें मिल जाएगी। The project starts with 40 workers working 8 hours a day. After 10 days, 10 workers leave. After another 10 days, 10 more workers leave. 1 second. Okay, so क्या क्वेश्चन था, चल रहा था? ठीक है, 40 वर्कर्स हैं, 50 डेज में 8 आवर्स पर डे करके वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो वर्क यहाँ से मिल जाएगा हमें, वर्क विल बी इक्वल टू 40 into 50 into 8. This is our work. The project starts with 40 workers working 8 hours a day. And after 10 days, 10 workers leave. यानी कि फर्स्ट 10 डेज में उतना ही वर्क हो रहा है जितना होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिवली वर्क कितना करना है, 1450, दैट इज इक्वल टू 2000 into 8, 16,000 यूनिट्स। So first 10 days, from day 1 to day 10, 40 workers are working. Days at 10, 14, 10 to 8. Work done will be 8 into 4, 32, 3200 units. Then 10 workers are going to leave after 10 days. So from day 11 to day 20, workers are 30. After 10 more days, 10 more workers leave, and so on. This pattern continues until only 10 workers are left. The remaining workers then continue until the work is finished. However, every time workers leave, the remaining workers increase their daily working hours by 2 hours. Like this time, there are only 30 workers. They are working for 10 days, but number of hours kitna hai? Daily work hours are 10 now. 3000 units work will be done in this case from day 11 to day 20. Similarly, from day 21 to day 30, number of workers will be 20. Number of days are 10, and number of hours will be 10 plus 2, 12. So work done will be 12 into 2400, 2400 units. After day 30, फिर हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे, 20 minus 10, 10 हो जाएंगे. So after day 30, number of workers will be constant, 10 only. Okay, वर्क रिमेनिंग देख लेते हैं, क्योंकि now the number of hours will also be constant, 12 only. So कितना वर्क डन हो गया, 3200 plus 3000 plus 2400, that is 8600 units work has been already done. So remaining work is equal to 16,000 minus 8,600. Like remaining work remaining is equal to 16,000 minus 8,600, that is equal to 7,400 units. और डेली वर्क कितना होगा, डे 31 ऑनवर्ड्स, वर्क इन अ डे दैट विल बी इक्वल टू 10 वर्कर्स वर्किंग 12 hours, तो 120 units. So number of days taken will be equal to 7400 divided by 120. So 740 by 12 or 185 by 3, which will be roughly 61 and 2 by 3. 61 and 2 by 3 days. So total days taken will be 30 days already हो गया, 30 plus 61 and 2 by 3, and hence 91 and 2 by 3 days will be taken in completing this work. Option B will be the answer. Okay, clear है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या फिर इस क्वेश्चन में यही कर सकते हो कि फर्स्ट 10 डेज में तो वही सेम वर्क हो रहा है जो हमारा इनिशियली क्वेश्चन में मेंशन है, तो ऐसे भी सोच सकते थे कि फर्स्ट 10 डेज का वर्क तो सेम है, तो इफेक्टिवली द वर्क रिमेनिंग आफ्टर 10 डेज इज 40 वर्कर्स का वर्क फॉर 40 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। तो ये भी कर सकते हैं कि पहले 10 डेज का वर्क हम इग्नोर मार देते, ठीक है, उसके बाद में ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करते, बट ये ध्यान रखते हैं कि लास्ट में कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि 10 डेज का वर्क हमने इग्नोर किया है, तो वो 10 लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है उस केस में, ठीक है, कि फर्स्ट 10 डेज में क्योंकि सेम ही वर्क हो रहा है, 40 वर्कर्स आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स पर डे, उसके बाद में ही चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, तो वैसे भी देख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। That fx is equal to root of 36 minus x square and gx is equal to log of x minus 2 on the base 2, then find the number of integers x such that the composite function hx is equal to fx upon gx is defined. Now there is a function hx that is fx upon gx and that should be defined. So what should be the integer values of x for which that is defined? Fx is equal to root of 36 minus x square and gx is equal to log of x minus 2 on the base 2. So for any function, let us say function हमारा a by b, तो दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया कि log of x minus 2 on the base 2 this should not be equal to 0। एडिशनली क्योंकि ये log है, सो log आर्गुमेंट ऑफ द log मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि x minus 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इज सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन, 36 minus x square, the value inside the square root that must be always non-negative। So 36 minus x square should be greater than equal to 0। All three conditions must be satisfied। So if log of x minus 2 on the base 2 is not equal to 0, तो बेस 0 पे क्या होगा, सॉरी बेस 0 बोल रहा हूँ, इक्वल टू 0 वैल्यू कब होगा, व्हेन log of 1 वी आर टेकिंग, है कि नहीं, तो log of 1 is equal to 0, सो यानी कि 2 to the power 0 which is equal to 1, x minus 2 should not be equal to, and hence x should not be equal to 3। This is your first condition। Secondly, x should be greater than 2। And lastly, 36 should be greater than equal to x square, or x square should be less than equal to 36। x square minus 36 is less than equal to 0। You get x plus 6 into x minus 6 less than equal to 0। So two critical points are minus 6 and plus 6. So value of x should be between minus 6 and plus 6, including both the points। So x should be between minus 6 and plus 6। All three conditions should be satisfied। तो x should not be equal to 3, x should be greater than 2, and x should be between minus 6 and 6। तो क्या वैल्यू हो सकता है, x कैन बी 3, नहीं हो सकता क्योंकि 3 नहीं होना है, 2 से तो बड़ा ही होना था, ठीक है, ग्रेटर देन 2, नॉट इक्वल टू 3, तो कैन बी 4, 4 यस हो सकता है, 5 पॉसिबल, 6 पॉसिबल, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6, तो ओनली दीज 3 वैल्यूज आर पॉसिबल, 4, 5 एंड 6। ऑप्शन बी 3 विल बी द आंसर। Only 3 values of integer are possible in this case। Okay, next question पे चलते हैं। Consider the region defined by mod of x minus 2 plus mod of y plus 3 that is less than equal to 4। So what is the area of the portion of the region that lies in the third quadrant? Area of the portion of the region that lies in the third quadrant। Okay, so in this case if we have been given, ठीक है, रीजन निकालना है अल्टीमेटली में mod of x minus 2 plus mod of y plus 3 less than equal to 4। So first of all we should find out the graph of mod of x minus 2 plus mod of y plus 3 equal to 4, and all the values inside that graph will be in our satisfying region। but हमें चाहिए क्या, area of the portion of the region that lies in the third quadrant as well। and in third quadrant, this is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। in third quadrant x is less than 0, y is also less than 0। okay, so first of all if we have given equation mod of x plus mod of y is equal to some constant a, and we have to make a graph for this। basically in this case the graph is the mod of x implies distance of x from 0,
मॉड ऑफ वाई इंप्लाइज डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम जीरो। तो सेंटर हमारा है एक्स कॉमा वाई 0,0। तो अगर हम इफ वी आर टेकिंग वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग वाई इज इक्वल टू 0 तो एक्स एक्सिस पे आएगा। तो इफ यू आर टेकिंग वाई इज इक्वल टू 0 तो मॉड ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 0। सो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए। इफ वी आर टेकिंग वाई इज इक्वल टू 0 तो इन दैट केस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि एक्स शुड बी इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए। Similarly, if we are taking x is equal to 0, so mod of x will be 0, so mod of y will be equal to a, so y will be equal to plus a and minus a. So graph will be like this. Okay, this is the graph for mod of x plus mod of y that is equal to a. Center हमारा है 0,0 because we are taking distances of x and y from 0, distance of x from 0 as well as distance of y from 0. Effectively, this is equation mod of x minus 0 plus mod of y minus 0 is equal to a. तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका. In our case, the equation is mod of x minus 2 plus mod of y plus 3, यानी कि distance of y from minus 3, mod of y minus minus 3 that is equal to 4. So we need to find out the graph for this given function. So center, distance of x from 2, distance of y from minus 3. So x is equal to 2, y is equal to minus 3. The point will be somewhere here. X is equal to 2, y is equal to minus 3. So distance should be equal to 4. Okay. तो फ्रॉम दिस सेंटर, जैसे हमने इस केस में भी किया, ठीक है, एक्चुअली फ्रॉम 0,0 दिस पॉइंट विल बी एट डिस्टेंस ऑफ प्लस ए, दिस पॉइंट विल आल्सो बी डिस्टेंस ए. Similarly, these all 4 points are at a distance of a from the center. That center is distance of x from 0 and distance of y from 0, that is why 0,0. In this case, in our case, हमारी वैल्यूज क्या होंगी, 2,3 से 2,-3 से कितना डिस्टेंस चाहिए, 4 का, तो प्लस 4 minus 4. This will be 2 plus 4, 6, minus 3, 6, because y coordinate will remain same, x coordinate change होगा यहाँ पे. So this will be minus 3, 2 minus 4, which is minus 2. Similarly, plus 4 and minus 4 in y direction. So minus 3 plus 4 will be plus 1. So 2, 1, and minus 3 minus 4 will be 2, minus 7. This will be the graph. एक सेकेंड, ग्राफ थोड़ा बेटर बना देते हैं, बाद में तभी प्रॉब्लम आएगा. ओके, हमें चाहिए द रीजन दैट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, like we need area of this part only. And this is a triangle. We need area of this triangle. To find out the area, we need these 2 points, this point here and this point here. Okay. So for these 2 points, we know that x value of x will be equal to 0, x coordinate to 0 होगा, तो बस अपनी इक्वेशन में put x is equal to 0, we'll get these 2 points. So at x equal to 0, the equation will be mod of minus 2 plus mod of y plus 3, this is equal to 4. Mod of minus 2 is equal to 2 only, so mod of y plus 3 will be equal to 4 minus 2, which is equal to 2. Or this is saying distance of y from minus 3 should be equal to 2. तो नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करें, सो माइनस 3 का डिस्टेंस कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो माइनस 3 प्लस 2 विल बी minus 1 and minus 3 minus 2 will be minus 5. So the y coordinates of 2 points are minus 1 and minus 5, यानी कि this point will be 0, minus 1 and this point here will be 0, minus 5. बट हमें as such points की जरूरत नहीं थी, हमें तो डिस्टेंस की जरूरत था. ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो we have this height here and this base value. This base is equal to 4, this is 2, this is 2, so total base is equal to 4. And this height here, this is equal to कितना है, minus 3, 0 point है, and this is minus 3, minus 2, so this height is equal to 2. So for this triangle, base is 4 and height is 2,
area of this triangle will be equal to 1 by 2 into base into height, 1 by 2 into 4 into 2, which is equal to 4 square units. Option E will be the answer. Is that part clear? ठीक है. If this is clear, तो कमेंट में मेंशन करना कि what will be area in the fourth quadrant. Area of the region in the fourth quadrant क्या होगा? Okay, answer in the comments. So these are all the questions in this session, and I believe जो मैंने डिस्कस किया वो सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी. फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल, and give a feedback in the comment section, and also like this session if you like this one. That's all for this session. Bye bye, take care and keep learning, and also comment about area in the fourth quadrant. Take care, keep learning.